Hello everyone, myself Nihal. Welcome back to Global Online Classes. So here it is the second lecture of income tax in which we are going to discuss what is resident, residential status, who are resident, who are non-resident, who are ordinary resident. Okay. Accordingly, what is the tax rate, who is taxable, who is not taxable. These things we are going to study in this lecture. Okay, so it is very important, it is very helpful for your upcoming UGC NET examination. The people, the students who are studying for the upcoming UGC NET examination, which is going to hold this year 2023 in June. Okay, this video, these all videos are going to help you to crack this examination in very first attempt. Okay, so commerce paper 2, the people who are studying for the commerce paper 2 need to watch these videos to the end. Okay, because every chapter, every topic we are going to discuss in a detail, so it is definitely going to help you for your examination. Clear? And one more important thing is that if you're watching this video for the first time, the people who are new for this channel, you have to subscribe this channel, like the hit the like button, and most important, share this video to the maximum people, so the helpful, the needful people will be uh, getting this video. Okay. One more most important thing I would like to tell you that for upcoming UGC NET examination which is going to held in June 2023, people who are studying for commerce background, we are providing you full course for paper 2 commerce, in which we are providing you the complete video lectures in which all unit of commerce subject we are going to complete. Okay, then next, complete syllabus notes, mock tests, PYQs with explanation, doubt clearing sessions, marathons, and completely paper 1 is free for this course. That means if you purchase the paper 2 complete course, you will be getting the paper 1 course free of cost. Okay, so don't miss this opportunity. Let's grab it and start your preparation for your upcoming UGC NET examination. If you want to join this course, please contact on this below number. आपको सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है, नॉर्मल कॉल्स नहीं चलेंगे, नॉर्मल कॉल्स लगेंगे नहीं. सो यू कैन ओनली व्हाट्सअप डू व्हाट्सअप कॉल और डू मैसेज ऑन व्हाट्सअप. ओके, सो hurry up and join this course. Now let's see what is residential status. Okay, the total income of an SEC cannot be computed unless we know his residential status in India during the previous year. Okay, see, if you want to calculate the tax on income, you need to understand whether this citizen of India is resident of India or not. Okay, then after, the income will be calculated, the taxable income will be calculated. Okay, so in the previous year, whether this citizen is resident in India or non-resident in India or ordinary resident in India, that decides the taxable income. Okay, in example, SEC may earn his income in India or outside India or both the places. Okay, if a person earning profit, earning money, earning income from India or outside India or both. Okay, अगर वो इंडिया के बाहर से कमा रहा है, इंडिया के अंदर कमा रहा है या दोनों तरफ से कमा रहा है. ओके, ये पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इनकम है उसका वो टैक्सेबल कितना है, टैक्सेबल है कि नहीं, वो हम डिसाइड करेंगे. सो बेसिकली these things are decided, basically these things are fixed. Okay, accordingly what we do, we calculate the taxable income. Correct? So one more thing, you must be knowing what is SEC, who is SEC. Okay, in the previous lecture we have discussed these things, these terms, which are very important for your next lectures, because these terms are important. Okay, we are going to use these terms very frequently. Okay, which income is assessable in India depends on the residential status of an SEC. Correct?
there are separate rules for the determining the residence of the different kinds of SCC. Okay, so उसके लिए भी कुछ rules है, हम किसे नॉन रेसिडेंट कहेंगे, किसे रेसिडेंट कहेंगे. Okay, these things will be decided by the rules. There are multiple rules, that rules decides who is the citizen of India, who is the non resident of India. Okay, clear. So these rules also we are going to discuss. Accordingly we need to calculate, or we need to find out whether this citizen is resident or non-resident. Okay, so these rules are very important. Okay, again I am saying these rules are most important because इसके ऊपर भी तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक इंसान है, इंडिया में इतने इतने दिन रहा है. ओके, कुछ दिन वो इंडिया के बाहर रहा है. ओके, तो ये कितने दिन इंडिया में रहा है, कितने दिन बाहर रहा है, ये पूरा कैलकुलेट करके हम डिसाइड करते हैं कि दैट पर्सन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. ओके, एंड देन अकॉर्डिंगली हिज इनकम विल बी कैलकुलेटेड, and the income is earned from the which country, or whether it is in India, whether it is outside India, that also will be decided. Okay, that income will be calculated whether it is taxable or not. Understanding or not? समझे? जो इनकम है वो कितना टैक्सेबल है, टैक्सेबल है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड होता है, whether this citizen is resident or non resident or ordinary resident. ओके, और वो कैसे डिसाइड होता है, वो ऐसे डिसाइड होता है कि whether this person living in India or living outside the India or visited outside the India, visited other country or visited India, इसके ऊपर डिपेंड होता है. तो बेसिकली कुछ रूल्स है जो डिसाइड करते हैं ये इंडियन सिटीजन का रेसिडेंशियल स्टेटस. समझे? नाउ लेट्स डिस्कस रूल्स. सी, यू कैन सी दिस table. By this table we are going to study the residential status. Okay, see, in this table a resident is there, in the opposite side there is non-resident, NR जिसे हम कहते हैं. Clear? एक होता है resident, दूसरा होता है non-resident. Correct? Who is resident? Again in resident there are two types. One is ROR, second is NOR. ROR means resident and ordinary resident. Second is NOR, resident but not ordinary resident. Okay, residency in India is determined by physical number of days stay in India. So जितने दिन इंडिया में रहा है, कितने दिन इंडिया में रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि whether this person is resident, non-resident, ROR और NOR. Clear? Understanding? तो वो कितने दिन होते हैं, है ना? How many days he need to be there in India, outside the India, that will decide the residency of a citizen. Understanding? So वो क्या rules है, किस rules के हिसाब से हम उसे resident कहेंगे, उसके residential status हम decide करेंगे, है ना? That is most important. Understanding? तो कभी कभी एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस हमें निकालना होता है. अंडरस्टैंडिंग? वन पर्सन्स डेज, है ना, डेज in which he is staying in India or outside India will be given in the question. Accordingly we need to find out whether this person is resident, non-resident, resident but ordinary resident, resident but not ordinary resident. ये हमें डिसाइड करना होता है. Clear? Let's see. Now here you can see the basic conditions to decide whether this person, whether the citizen is resident, non-resident or whatever. ठीक है? So basic conditions इसमें क्या है, दो basic conditions होते हैं जो fulfill करने पड़ते हैं to give the name of resident or non-resident. Okay? Name मतलब डिसाइड करने के लिए कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है या जो भी है. ठीक है, तो इसमें दो बेसिक कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. एक है 182 डेज, ओके, मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर शुड बी देयर इन इंडिया. ओके, और दूसरी कंडीशन है 60 डेज से ज्यादा, फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज से ज्यादा, या फिर 365 डेज
इन 4 फाइनेंशियल ईयर्स में होना चाहिए। मतलब देखो 4 साल में मिनिमम 365 दिन इंडिया में होना चाहिए, या फिर पिछले साल में मिनिमम 60 डेज वो इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, ये सेकेंड रूल है। पहला रूल है कि 182 डेज से ज्यादा इसमें एक साल में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है 60 डेज से ज्यादा इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या फिर 365 डेज से ज्यादा इन 4 फाइनेंशियल ईयर्स। क्लियर, ये दो बेसिक कंडीशंस है। देखो एनी वन ऑफ द टू कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके, इस दो में से अगर एक बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है, ओके, द सिटीजन इज फुलफिलिंग only one condition out of these two basic conditions, then it will called resident, ordinary resident, या फिर not ordinary resident। ठीक है, none of the conditions satisfied, if the person is not fulfilling the both basic conditions, then it is called non resident। ओके, अगर इंसान 182 डेज से कम है या फिर 60 डेज से कम है, 365 डेज इन 4 इयर्स उसमें भी कम है, तो उसे कहेंगे हम नॉन रेसिडेंट। ओके, अगर इंसान 182 डेज से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में, तो उसे हम कहेंगे ROR या फिर NOR। ओके, या फिर 60 डेज से ज्यादा इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या फिर 365 डेज इन 4 फाइनेंशियल ईयर्स। if this condition is fulfilling, then we will say it is ROR or NOR। clear, these two basic conditions are most important because when you are calculating the residential status, okay, it is important to by heart, आपको पता होना चाहिए ये बेसिक दो कंडीशंस। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, आप रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें ही ये डिपेंडिंग है कि आप कैसे डिसाइड करते हो रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, देखो जैसे कि इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, है ना। इसमें कुछ कंडीशंस है कि समझो कि इंडियन सिटीजन है जो कि इंडियन शिप क्रू है और या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया है ना। देन इफ इंडियन सिटीजन और PIO कम्स ऑन विजिट टू इंडिया, ओके, इंडियन सिटीजन who is living outside the India or PIO who is coming to visit India, okay, these two things, these two conditions, इसमें अपवाद या फिर हम बोल सकते हैं कि अलग है। ठीक है, these are the notes। इसमें क्या होता है देखो, these two conditions if fulfilling, then it is to be termed as resident। okay, if the Indian citizen living India as a member of crew of a Indian ship और द पर्पस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया, ऐसा है, या फिर इंडियन सिटीजन है या फिर PIO है जो कि इंडिया में विजिट कर रहा है, तो ये लोग जो है इनको हम क्या कहेंगे, इट इज टू बी टर्म्ड एज अ रेसिडेंट। अंडरस्टैंडिंग, द नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया शुड बी 182 days, minimum 182 days, okay, in the relevant previous year। ठीक है, अगर ये दो भी है, इंडियन क्रू है, सॉरी इंडियन शिप का क्रू है, या फिर फॉर दी एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया है, इंडियन सिटीजन PIO ये जो इंडिया में विजिट कर रहे हैं, इनको भी 182 डेज से ज्यादा, मिनिमम 182 डेज प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम रेसिडेंट कहलाएंगे। समझ रहे हो? आगे देखो, सम एडिशनल कंडीशंस। ओके, resident in India for at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant financial year। okay, ये first condition हो गई। then second he has been in India for 730 days or more during 7 previous years immediately preceding the relevant financial year। clear, अभी देखो, एक तो था 182 डेज वाला, दूसरा था 4 इयर्स 365 डेज होना चाहिए। अब ये एडिशनल कंडीशंस में ये है कि पिछले 10 साल में, ओके, इन द प्रीवियस 10 इयर्स, ओके, 2 साल जो है, कम से कम 2 साल इंडिया में होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, रेसिडेंट कहेंगे। ओके, 10 प्रीवियस ईयर, है ना,
immediately preceding the relevant financial year. ओके उसके पहले 10 प्रीवियस ईयर्स में मिनिमम 2 साल जो है वो क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ये एक एडिशनल कंडीशन है। दूसरी है 730 days or more during 7 previous years. More than 730 days it should be there in previous in 7 previous years immediately preceding the relevant financial year. Okay, if the both conditions are satisfied, then it is called ROR. If one of the condition is not satisfied, then it is called NOR. Understanding? If the citizen is fulfilling both the additional conditions, that citizen will called ROR. If the citizen is fulfilling any one of the conditions, okay, then it will be called NOR. ठीक है, one or both of the conditions not satisfied, ओके अगर एक नहीं है या फिर दोनों भी नहीं है तो उसे कहेंगे हम NOR। ठीक है, अंडरस्टैंड? पहले थे कुछ बेसिक कंडीशंस हमने सीखे, राइट? 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद 365 डेज इन 4 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में वो होना चाहिए इंडिया में, तभी हम उसे रेसिडेंट कहेंगे। ठीक है, उसमें जो 2 कंडीशंस फुलफिल करता है उसे हम ROR कहेंगे। ठीक है, जो नहीं करता है उसे हम NR कहेंगे, नॉन रेसिडेंट कहेंगे। उसमें हमने कुछ नोट्स देखे, इंपॉर्टेंट नोट्स, जो इंडियन क्रू है या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है या फिर PIO है ना, ये सब 182 डेज में इंडिया में होना चाहिए, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, रेसिडेंट कहेंगे। करेक्ट। देन इट कम्स द एडिशनल कंडीशन, है ना। एडिशनल कंडीशन में भी हमने 2 एडिशनल कंडीशंस वी हैव डिस्कस्ड in which if the both conditions are satisfied, if the both conditions are fulfilled by the citizen, that citizen will be called as a ROR. Clear? If any one of the conditions or both conditions are not fulfilled or not satisfied, then that citizen will be called as a NOR. Clear? Very easy. Now here it comes the incidence of tax. That is the most important thing when you are calculating the taxable income. Okay, here you can see the residential status, ROR, NOR and NR, and in the second side on the opposite hand it is income liable to tax in India. Clear? So understand this, ROR, if the person, if the citizen is ROR, then the global income liable to tax in India. Clear? If the ROR is earning or his income is global income, then it is liable to tax in India, तो उसे tax India में pay करना पड़ेगा। Understand? If the ROR is there, then global income liable to tax in India. NOR, okay, income accrued or deemed to accrued in India. Okay, conditions देखो, income accrued or deemed to accrued in India, ये एक हो गया। दूसरा है income received or deemed to be received in India. Accrued and deemed to accrued, received, deemed to be received, income derived from business controlled और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर ये 3 चीजें फुलफिल होती है, इफ दीज 3 कंडीशंस आर फुलफिलिंग, देन दैट इनकम, दैट अर्निंग इज टैक्सेबल इन इंडिया। अंडरस्टैंडिंग? NOR will be paying the tax in India if these 3 conditions are fulfilling, this one, this second and this 3. Okay, then we will see the NR. Okay, income accrued or deemed to be accrued in India, then income received or deemed to be received in India. These incomes, these earnings are taxable in India. Okay, income liable to tax in India we have seen on the second hand. In the left hand there is a residential status, ROR, NOR and NR. Okay, accordingly ROR, the global income liable to tax in India. NOR, these 3 conditions should be fulfilled to taxable, whether to say this income is taxable or not. Okay, in terms of NR, if the income is accrued or deemed to be accrued in India, second thing, income received or deemed to be received in India, then this income will be taxable. So this
process. These rules are called incidence of tax. Understand? So we have seen multiple things today. देखो, we are going slowly because everything, every point we need to understand in tax. Okay, हर एक चीज छोटी छोटी हम सीखने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके सब सीखने वाले हैं. ठीक है? So I hope you understood today's lecture. We have seen the tax, residency status, who are NOR, who are ROR, who are NR, what are the basic conditions for that, what are the additional conditions for that, important notes for that, and incidence of tax. Clear? Okay. So bye bye everyone. See you in the next lecture. Bye bye. Take care.